में खारिज हुआ विपक्ष का कार्य स्थगन प्रस्ताव, लोकसभा में भी नहीं चला प्रश्नकाल। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और एनडीपीपी के बीच हुआ समझौता। एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मेघालय में भी बीजेपी ने सभी 60 सीट पर घोषित किए उम्मीदवार। G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा, बैठक में विस्तार से चर्चा के बाद सस्टेनेबल ग्रोथ के लक्ष्यों को हासिल करने में मिलेगी मदद। चेन्नई में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज आखिरी दिन। आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर आज की महत्वपूर्ण चर्चा। वहीं जोधपुर में आज G20 देशों के प्रतिनिधि रोजगार से जुड़े अहम मसलों पर कर रहे हैं बातचीत। जम्मू के नरवाल डबल ब्लास्ट में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ब्लास्ट के मुख्य आरोपी सहित 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आतंकियों से परफ्यूम आईईडी बरामद। जम्मू इलाके में पहली बार हुआ था परफ्यूम आईईडी का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला, $5 के करेंसी नोट से हटेगी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर। एलिजाबेथ के बाद किंग चार्ल्स की तस्वीर भी नोट पर नहीं छापी जाएगी। नोट पर ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी संस्कृति को मिलेगी जगह। और महिलाओं की T20 त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में आज भारत दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला। T20 विश्व कप से पहले भारतीय टीम की सीरीज पर कब्जा करने पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद में आज दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अपने कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव को सभापति ने खारिज कर दिया। सभापति ने कहा कि सभी नोटिस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अडानी से जुड़े मामले पर विपक्ष की मांग थी कि एसबीआई और एलआईसी पर चर्चा हो। इस मामले में विपक्ष चाहता है कि जेपीसी इसकी जांच करे। विपक्ष की मांग पर स्पीकर ने कहा कि पहले प्रश्नकाल चलने दिया जाए, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया और हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे और फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई। भाजपा ने आज नागालैंड और मेघालय के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। प्रेस वार्ता में बताया गया कि नागालैंड में भाजपा का एनडीपीपी के साथ गठबंधन रहेगा, जिसमें एनडीपीपी 40 और भाजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने अपने 12 विधायकों में से 11 को दोबारा टिकट दिया है। इसी मीटिंग में जो तय हुआ है, दोबारा 2023 का जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें 40-20 का गठबंधन एनडीपीपी पार्टी के साथ होगा। इन 20 सीटों में हम लोगों ने तय किया है और सीईसी का अप्रूवल मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय में अकेले ही लड़ने का फैसला किया है। पार्टी राज्य की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में 27 फरवरी को होगा। नतीजे 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि हम मेघालय में पहली बार 60 की 60 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लड़ेंगे। वी विल कंटेस्ट ऑल 60 कंस्टिट्यूएंसीज इन मेघालय एंड बीजेपी विल कंटेस्ट ऑल दी 60 सीट्स ऑन इट्स ओन। हम अपने बूते पे अपने संगठन की क्षमता के अनुसार 60 की 60 सीट लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका को रद्द कर दिया जिसमें नेताओं के किसी एक पद के लिए एक से ज्यादा जगह से चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला विधायिका से जुड़ा है, इसलिए इस पर फैसला संसद को ही करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी प्रत्याशी को एक से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इजाजत विधायी नीति से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए यह संसद का फैसला होगा कि इस राजनीतिक लोकतंत्र में यह विकल्प लोगों को मिलना चाहिए या नहीं।
धनबाद अग्निकांड का झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। झारखंड हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में समयबद्ध तरीके से फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। वहीं उच्च न्यायालय ने धनबाद आग की घटना पर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। हादसे में घायल हुए कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो कई ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! जब AIC का है साथ तो डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। जम्मू के नरवाल इलाके में हुए दोहरे धमाके में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने ब्लास्ट के 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि हमले को सीमा पार से अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान से हैं और उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर इस धमाके को अंजाम दिया था। 21 जनवरी को जम्मू के नरवाल में हुए दोहरे धमाके में 9 लोग घायल हो गए थे। धमाके के बाद से पुलिस ने हमलावरों की जांच तेज कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 26 जनवरी की देर रात 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। अब तक मामले में कुल 11 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इसी मामले के मुख्य आरोपी आतंकवादी आरिफ को गिरफ्तार किया है, जो 3 साल से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। सरकारी टीचर आरिफ नरवाल में हुए दोहरे बम ब्लास्ट में मुख्य आरोपी है। आतंकी आरिफ के पास से पुलिस ने परफ्यूम ID बरामद की है, जो कमरे में खुशबू करने वाली बोतल के समान है। जम्मू में पहली बार परफ्यूम ID पकड़ी गई है। आरोपित मोहम्मद आरिफ ने फरवरी 2022 को जम्मू के शास्त्री नगर में एक IED धमाका किया था। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने दावा किया है कि कटरा बस में हुआ धमाका भी इसी ने किया था। साल 2010 में आरिफ RET टीचर नियुक्त हुआ था। वर्ष 2016 में वह शिक्षक बन गया था। आरिफ का मामा पाकिस्तान में है। बीते वर्ष दिसंबर महीने में ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आरिफ को IED भेजे गए थे। ID वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर रजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे IDs लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है। और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने ई-नीलामी के तहत 22 राज्यों में खुले बाजार के माध्यम से बिक्री योजना के माध्यम से पहले दिन 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया। पहली ई-नीलामी में 1100 से अधिक बोलीदाताओं ने भाग लिया।
निगम ने ई नीलामी के लिए निर्धारित गेहूं के 25 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन बेचने की पेशकश की है। इसके लिए राजस्थान में नीलामी आज आयोजित की गई है। ई नीलामी के माध्यम से गेहूं की बिक्री मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक प्रत्येक बुधवार को पूरे देश में जारी रहेगी। भारत सरकार ने योजना के तहत 2,350 रुपए प्रति क्विंटल की रियायती दर पर गेहूं को आटा में परिवर्तित करने और इसे अधिकतम 29.5 रुपए प्रति किलोग्राम की खुदरा कीमत पर जनता को पेश करने के लिए 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं आरक्षित किया है। सरकार का मानना है कि इससे बाजार में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को कम किया जा सकेगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल पाएगी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड एमओयू होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। भारत की अध्यक्षता में G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। इस 2 दिवसीय बैठक में G20 के सदस्य देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 94 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। दीर्घकालिक वित्त संबंधी कार्य समूह G20 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। इसका उद्देश्य वैश्विक विकास और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक स्तर पर वित्तीय उपलब्ध कराना तथा अधिक हरित और अधिक लचीले तथा समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस समूह पर दीर्घकालिक वित्त के लिए संस्थागत और बाजार संबंधी बाधाओं की पहचान करने की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वित्तीय कार्य समूह की बैठक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में मदद मिलेगी। This first sustainable finance working group meeting is very important for the people of the globe, and with the coordinated efforts, with the public-private participation, with the proper policy, with proper roadmap, definitely out of this today's event we are going to get a very important way out to meet the sustainable development goals agenda and also the objective of the Paris Agreement. भारत की अध्यक्षता में G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक आज से गुवाहाटी में शुरू हो गई है। इस मौके पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संस्कृति, साहित्य, खान पान, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। हमारे संवाददाता रवि धीमान ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक के बाहर, वेन्यू के बाहर ऐसे कई स्टॉल लगाए गए हैं जो असम की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको दर्शाते हैं। भले वो असम की चाय हो जो पूरे दुनिया में मशहूर है, या फिर असम के जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी जो उनका काम है वो हो। ये सब के सब डेलीगेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और जो तमाम डेलीगेट्स हैं इन स्टॉल्स पर घूम भी रहे हैं और जो कई चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, सराह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एक तमाम डेलिब्रेशंस हो रही हैं अंदर, एक बेहद जो अहम मुद्दा है उस पर, उसके बाद डेलिब्रेशंस के बाद जब भी ब्रेक होता है, इन स्टॉल्स के ज़रिए आसाम के जो कल्चर है उससे अपने आप को जोड़ने के लिए, कल्चर को और अच्छी तरह से जानने के लिए इन स्टॉल्स की मदद से जो डेलीगेट्स हैं वो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, पूर्वोत्तर के जो हिस्से हैं उससे भी अच्छी तरह जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ रवि धीमान, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। और चेन्नई में जारी G20 शिक्षा समूह की बैठक का आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन जहां आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर एक सत्र आयोजित होगा, तो वहीं एक अन्य सत्र में समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कल इस अहम बैठक के दौरान मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना और हर स्तर पर तकनीक सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगात्मक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस बैठक में शामिल होने पहुंचे G20 शिक्षा समूह के सदस्यों ने कहा कि ये बैठक कोरोना काल में छात्रों के हुए लर्निंग लॉस को कम करने में G20 देशों द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को आपस में साझा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कुछ प्रतिनिधियों की ये भी कहना था कि ये बैठक आगामी बैठकों की दिशा भी तय करेगी। केंद्र सरकार में स्कूल शिक्षा मामलों के सचिव संजय कुमार ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि चेन्नई में आयोजित शिक्षा समूह की पहली बैठक G20 देशों में स्कूल शिक्षा के मामलों में किए गए नवाचारों को साझा करने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुई। उन्होंने बताया कि G20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में खासतौर से भारत की नई शिक्षा नीति को जानने में रुचि दिखाई। जोधपुर में आज से G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय इस अहम बैठक में वैश्विक कौशल अंतराल और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा होगी। बैठक के पहले दिन वैश्विक कौशल और योग्यता सामंजस्य, सामान्य कौशल वर्गीकरण के लिए रूपरेखा पर चर्चा करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। और आइए केंद्रीय मंत्री R.K. सिंह इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। चैलेंज इन एनर्जी was seen to be linked with the challenge to the climate change. And the emphasis was on energy transition. That emphasis remains. But now, another challenge has emerged. And that's the challenge of energy security. And suddenly, and there is also a challenge of supply chains. Suddenly you have many countries, developed countries, facing difficulties in terms of energy security. Disruptions were radical. Those disruptions have resulted in hardships for the poorer people or for the people with not enough income. The countries have had to intervene, have had to give subsidies. So energy security has come center stage. We believe that it should always have been center stage. You can't talk about energy transition before you talk about access and security. Now, energy access is again been something which has been missing from the discourse with the past decade or decade and a half. If you will all recall, all the talk has been only about energy transition. But what about 600 or 800 million people around the world who do not have access to energy? Now, when you talk to those people about energy transition, for them it is meaningless. They just don't have access to energy. And they would rather get access by any means possible, whether it is fossil or non-fossil, doesn't matter to them. There is also a question of which India has been and all the developing world has been raising from time to time. And that is that the transition has to be in accordance with, has to be a just transition and in accordance with the economic situation and the development parameters of each country. Because there are developed countries whose peoples have reached a certain level of development. There are developing countries whose people still have to reach that level of development. So there will be differentiated responsibilities. The developing countries will need to be given space to develop. So when we talk about energy transition, now that has to be nuanced. First of all, we don't talk about only energy transition. I mean, that is how we see it, and that is what we shall discuss in the coming conferences. And this is something which I believe carries resonance throughout the world. As I had gone to preside over the meeting of the International Renewable Energy Agency in Abu Dhabi, and there also these discussions came up, also in Davos.
So energy transition is important, absolutely, I have no doubt about it. And India is a leader in energy transition. Despite the fact that our per capita emissions are one-third, almost nearly one-third of the world average, we are a leader in energy transition. But we have to stare the reality in the face, and that is that access to energy for 600, 800 million people is something which the world has to take cognizance of and discuss. And energy security is again something which the world has to take cognizance of and discuss and mainstream in their discourse. Because when even developed countries came across the problem of availability of energy, they prioritized energy security before the question of transition. This is what the developed countries do. And this is what any country will do. Any country will first and foremost look at securing its energy supply. And only then you start, once your energy supplies are secure, only then you start thinking about transition. That okay, the energy should come from non-fossil sources, renewable sources, etc. So we are having this conference, and energy is a major part of the G20 discussions, and we are having this conference at a very critical juncture for the field of energy. We have been fortunate. We have been fortunate despite the fact that our demand has grown rapidly. It has grown in an unprecedented fashion. This year compared to last year, the demand is almost 10.5% higher. And compared to some months it was 12.5% higher than last year. Despite that, our supplies have been constant. Despite that, our energy prices have not gone through the roof. And we have been comfortable. So we have been fortunate. We have been fortunate. And we shall take steps to make sure that there is sufficient electricity available for whatever is the situation. But that apart, for the world, when we are discussing issues about energy for the world, these are the aspects which will be discussed, which we shall discuss. Supply chains are important. And security of supply chains has again come center stage. So access, energy security, and energy transition. Energy security includes, but in that order. Of course, we believe that they are complementary. We believe that they are complementary, in the sense that if you push energy transition, you are also so insulating yourself somewhat from supply chain disruptions, from energy security issues, because the nature of renewable energy is such that you set it up in your own country, the sun is everywhere, the wind is everywhere. So they are complementary in our view, in our country's view. For us, a million people without access. We have been championing the cause through the International Solar Alliance. It's time that the whole world lent its weight to this mission, which we have to address. So we look forward to a year of very fruitful discussions. As I said, these discussions are critical to setting the world discourse. These decisions are critical to setting the agenda. And as I said, we are fortunate that we are sharing it. But the basic concerns which are not only our concerns, but I believe the concerns the world now will be discussed, debated. There are no immediate solutions to the energy sort of crisis which has gripped parts of the world. There are no immediate solutions. There are only long-term solutions. So the energy transition also will take time, but it will also have challenges. Energy transition. We will transition. We are transitioning. But if you expect developing countries to transition without access to technology, it won't happen. We can talk about it, but it won't happen. So the developing countries will need access to technology. If you talk about energy transition with the developing countries without access to finance, it won't happen. So of the global carbon dioxide load in any case has been contributed by the developed countries, developed economies in the process of their development. So the developing countries also need space to develop. We are developing.
And at the same time, we are, of course, a leader in energy transition. We are the only major economy whose energy transition is consonant with a sub-2 degree rise in global temperature. We are the only major economy. And even independent agencies, they categorize us as one of the top 5 economies, in energy transition. And of those top 5, we are the only major economy. So, we are fine. We are fine. Our pace will continue, while, of course, securing our supply chains. Thank you. Thank you, sir, for your remarks. Yeah. Before we start questions, let me request you to kindly introduce yourself and your name of your organization before you ask the question. And you may raise your hands. The questions may kindly be brief, and only one question may be asked first. Only one question per correspondent. Seems rather harsh, but if we have time, we'll allow more questions. Initially, yes. No, I don't address me. I've been this is the boss. You have to look at her and ask her. Rishi from the business line. Yes. Sir, you have spoken about supply chain security, and parallelly India is itself developing its supply chain through various incentives like PLIs and MSIPs. What is the sense that India wants to convey to the G20 nations when it comes to diversification of supply chains as well as security of supply chains? No, the G20 and us, we are on one page in that, and we all agree that the supply chain has to be diversified. And the G20 sees India, the world sees India as a part of the solution. That, okay, if we build our capacities, that will lead to a diversification of the supply chain. So they look upon us as a country which is expected to take action to help diversify the supply chain. We are doing that. We are adding capacities, and that diversifies the supply chain because apart from. और आइए आपको लिए चलते हैं अब विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में. Affairs and Parliamentary Affairs, Shri V. Muralidharan will visit Sri Lanka from 4th February to participate in the 75th Independence Day celebrations of Sri Lanka, that is on 4th February 2023. During the visit, the Honourable Minister of State will also have separate bilateral interactions with the President and Foreign Minister of Sri Lanka. He will also have an interactive session with prominent members of the Indian diaspora, and we will share with you more details later. That was a brief announcement that I had. Happy to take a few questions. Yeah, why don't start you, and then I'll go. Sir, this is Abhishek Jha from CNN News 18. My question is regarding this media report that is coming from USA, where it has been reported that Prime Minister Modi may be having a meeting with President Biden, and USA side is very keen to have him somewhere around May, June. So if you could just say whether the possibility of Prime Minister's visit is being explored at... What is the exact question? Possibility of a visit is being explored. It is being explored by the NEA. Okay. I saw your hand. Siddhant, go ahead. I'll come back to you. Hi, I'm Siddhant from Beyond. My question is, we have seen the Khalistani violence in Australia. Has the government raised the matter with the government in Australia? And also we have seen similar incidents in Canada as well. With the Canadian government as well, we have raised the matter. Look, could you be a little more specific? What violence are we referring to in Australia, and what are you talking about? In Australia, we saw the violence over the weekend by the Khalistani extremists attacking the Indians. And the Canada one, which one do you have in mind? Brampton, there was a temple where we saw vandalization. So okay, fair enough. Yeah, go ahead. कादम्बरी शर्मा फ्रॉम एनडीटीवी इंडिया, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन. जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में हमारे जो हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने मुलाकात की प्रीमियर से विक्टोरिया में और मंदिर भी गए, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसी सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिला है इस सड़क पर हुए इस झड़प में जिसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं? Okay. One second. Yeah, go ahead. Manush. Microphone. Manas from PTI. There's been a report in the Bangladeshi media that Bangladesh government has sought a revision of the power purchase agreement it had signed with Adani Power for procurement of power from its Jharkhand plant. Okay. So do you have anything to say on this report? Hasini. Thank you. So Hasini Heather from The Hindu. It's been about a week since the government issued notice to Pakistan for calling for amendments to the Indus Water Treaty. I wanted to know 2 questions. One, whether Pakistan has responded in any way
shape or form, and whether the World Bank has said anything, and the second being that the Court of Arbitration in the Permanent Court of Arbitration, The Hague, has begun to hear the Indus Water Treaty case on Kishanganga and Ratle. Does this mean that whatever the outcome, and where India is not, does this mean that whatever the outcome, India is not present over there, India has boycotted the proceedings, does this mean that whatever the outcome of this will not be accepted by India? Okay. Let me take this round and I'll come back to a few questions. Abhishek, your question was regarding some media report, right? Look, I'm not going to get into commenting on such media reports, as you're very well aware, and report, but best avoided commenting on such reports. Siddhant, your question was regarding Australia and in fact and Canada, and there was some the attack that happened. I think it was January 30th. Let me first of all say we strongly condemn such attack by extremist elements, and we urge local authorities to investigate and punish the perpetrators. We have been repeatedly taking up with the Australian authorities our concerns about actions by such elements, including those that are proscribed terrorist organizations, in fact. We have also conveyed our firm rejection of the so-called Khalistan referendum and the politically motivated exercises by extremist elements. You had a specific query about it's been taken up with the Australian authorities. As I mentioned, we have been taking up. We have requested Australia to ensure the safety and security of members of the Indian community and their properties, and to not allow the use of Australian territory for activities that would be detrimental to Indian territorial integrity, security and national interests of India. We have in this regard noted the comments by some Australian leaders condemning the violence in Melbourne, and we will continue to take up this issue with the Australian authorities. In Canada, you had mentioned about a Canada incident. In that context, you would have seen the comments, I think, by the Canadian foreign minister denouncing the vandalism. We reaffirm this position strongly, and we of course condemn such acts of vandalization. So that's broadly what I wanted to say. आपने पूछा हिंदी में, देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम आग्रह करते रहते हैं, किया भी है, जैसे ऐसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन सहित ऐसे तत्व द्वारा ऐसे जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपनी चिंताओं को बार बार हमने ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज या अधिकारियों के सामने उठाया है. ये तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम की जो जिक्र किया था और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स द्वारा राजनीतिक रूप में ऐसे जो एक्सरसाइज या एक्शन लेते हैं, इस पर हमारी दृढ़ अस्वीकृति को भी हमने अवगत कराया है ऑस्ट्रेलिया के अथॉरिटीज को. हमने उनको कहा है कि भारतीय समुदाय के सदस्य और उनकी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और भारत के क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और राष्ट्र हित के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र के उपयोग का अनुमति नहीं देने का अनुरोध भी किया है. इस जो इंसिडेंट हुआ मेलबर्न में, हमने इस इंसिडेंट की निंदा करने वाले ऑस्ट्रेलिया नेताओं की टिप्पणी पर भी हमने गौर किया है. हमने देखा है कि कुछ लीडर्स ने ऐसी टिप्पणी किया है कि उन्होंने इसको खंडन किया है ऐसे एक्ट का. कनाडा का भी एक प्रश्न था कि हमने उस बारे में कनाडा के विदेश मंत्री ने एक ट्वीट अपने कमेंट्स दिए हैं जिसमें उन्होंने निंदा की है. हमने ऐसे ये जो स्टेटमेंट है उनका जो पक्ष है इस स्थिति की पुष्टि करते हैं और ऐसे वैंडलाइजेशन या अटैक्स के बारे में हम बड़ी निंदा करते हैं. कादम्बनी, आई थिंक दैट आपकी जो प्रश्न था इसका आंसर उसी में है. मैं ये कहना चाहता था कि हाँ, हमारे जो उच्चायोग हैं वहाँ वो मिले थे, वहाँ के प्रीमियर जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोविंस के प्रीमियर हैं, और ये बात उठाई गई उनमें कि आप इसमें, उन्होंने अपने ट्वीट भी किया है उनके इस मीटिंग के बारे में जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कड़ी शब्दों में इस इंसिडेंट को और जनरली ये जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं और जो सो कॉल्ड खालिस्तान रेफरेंडम के बारे में एक्शन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है. और मैंने जैसे कहा, हमने देखा है कि कुछ ऑस्ट्रेलियन लीडर्स ने इसका कंडेमनेशन भी रखा है और निंदा की है.
Manas, I don't have anything on that. As you clearly said, I understand you're referring to a deal between the sovereign government and an Indian company. I am not aware of the deal. I don't think we are involved in this. Suhasini, let me clarify on your question. This was regarding the Indus Water Treaty. Last week, as you said, we have issued, or rather our Indus Commissioner, India's Indus Commissioner for Indus Waters, Commissioner for Indus Waters, issued a notice on 25th of January for the modification of the Indus Water Treaty of 1960 to his Pakistani counterpart. This notice was issued with the intent to provide Pakistan an opportunity to enter into government-to-government negotiations to rectify ongoing material breach of the treaty. We have called upon Pakistan to notify a suitable date for the commencement of interstate bilateral negotiations under Article 12.3 of the treaty within 90 days. I am not aware of a response from Pakistan as yet. I also don't know I'm not aware of any response or comment by the World Bank. In any case, our notification by the Indus Commissioner was to his Pakistani counterpart, not to the World Bank. I would not speculate. You had asked me on the Court of Arbitration. That's a legal process. I would not speculate as to our position or the exact modality or approach. You are right. We are not involved or participating in that process. But further steps I would not like to prejudge at this stage. Next round of question. कौन सी पार्ट आपने तो पूछा नहीं एनीवे अच्छा हिंदी में चाहने की बात होती है आपको प्रश्न है तो पूछिए या मैं जवाब दूंगा देखिए 25 जनवरी को हमारे जो भारत के कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स कहलाते हैं उन्होंने अपने पाकिस्तान काउंटरपार्ट को जो सिंधु जल संधि के मॉडिफिकेशन के लिए उन्होंने नोटिस जारी की है जो 1960 की जो ये संधि है इस नोटिस को पाकिस्तान को इशू इसीलिए किया गया कि ये जो मटेरियल ब्रीच ऑनगोइंग मटेरियल ब्रीच है उस संधि में उसको सुधारने के लिए एक मौका दिया जाए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस शुरू करें और इसको अवसर प्रदान करने के लिए ही हमने ये नोटिस इशू किया है हमने पाकिस्तान को कहा है कि 90 दिन के अंदर इस ट्रीटी के तहत जो बायलैटरल नेगोशिएशन उनके आर्टिकल 12(3) के तहत जो अलाउड है उसमें उसको शुरू करने के लिए अपना कोई डेट वो बताएं और उसको अधिसूचित करें ताकि हम इसको आगे ले जा सकें अभी तक मुझे ऐसा कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है सुहासिनी ने पूछा था कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें कोई जवाब दिया हमने वर्ल्ड बैंक को लिखा तो नहीं था और ना ही मुझे मालूम है कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से If I could have a next round of questions, somebody one by one. Hold on, you just answer. Yeah, Yeshi. This is Yeshi Seli from the New Indian Express. India had sent an invite to Pakistan for attending the SCO Foreign Ministers meet. Any response from them? And what's the update on the 8 naval officers? It's been 6 months, 6 bail pleas have been rejected. That's the second question, but anyway. Okay. Okay, I saw. Yeah, please. Sorry, whose hand was up? Yes, sir. Please, before you. Yeah, go ahead. Sir, Shailesh from National Defense, sir. Sir, can you please tell us something about our NSA Ajit Doval sir's visit to US? And we hear that in media reports that perhaps US is ready to give away the technology of G414, or rather to produce the engine or something like that in India. Besides that, there was a delegation also that had prominent members. Industrial delegation also. Can you also tell us about that? Shorter questions, please. Okay, fair enough. Sorry, before I come to you, go ahead. Sir, Rishikesh from PTI. Has any government approached India to inquire about the status of Adani related? Sorry, repeat the question again. Has any government? Any foreign countries approached India to inquire about the status of Adani? Which erupted after the recent controversy. Please frame your question correctly. I am not still understanding this. Any foreign government approached us to inquire about the status of Adani group. Okay. Because Adani group is engaged in lots of infra project or other foreign countries. I'm not sure this is a foreign policy related question. Anyway, since you asked, I'll try to give you a response. Yes, please go ahead.
This is Manish Kumar Jha from Financial Express. The similar question regarding the National Security Advisor visit to United States. Again, there were rumors about some particular specific military deals was being discussed. Of course, it was reported in the media, but I would like a clarification from your side, as it is on broad. What clarification on what? I didn't get you. Specific military deals. Broad based on critical technology, or was it based on some specific military? About his visit, you want to know? Yeah, visit possible. Fair enough. Yeah. Because there were reports about some specific military deals which are going to take place, so I want a clarification on that. And if you talk about some emerging critical technology, could you talk about some of them which he's discussing with his counterpart or senior leadership in the United States? Thank you. Okay, Kalu. Kalu from the Hindu. Sir, of course, this is the year for G20, and India was expected to highlight its economic and all over achievement in the financial field for the world to see. Do you think the Adani issue as it has erupted, and also especially its regional ramifications in the field of, with the dealings that it had with our neighbors, especially with Bangladesh, Sri Lanka, other countries, do you think this is going to cast a shadow on our, image as far as G20 is concerned, especially in the coming months at the summit? Oh, interesting question. Okay, let me try this round of questions. Okay, Yeshi, your question was about the SCO, right? Look, let me just clarify. This has been going on a bit, and as you said, we are, as you know, we hold the current presidency of the SCO, and as is customary, as the president, India has been extending invitations to all SCO members, including Pakistan, for various events under our presidency that we have hosted and will continue to host as president. So that's probably what I wanted to say. I don't know what you mean by has someone. I'm not going to be able to get into specific invitations for specific events. These, as the events happen, or well before that, we extend invitations to all the participating countries, or member countries, and we expect them to attend our events in person. That's unless it's a virtual event. I think Pakistani officials might have attended some of these ones. I'll have to check. I think they have. So I'm not sure what you meant. On specific, let's say meetings, I don't have confirmation who all confirmed, who have not confirmed. So that's it. So you want the foreign ministers. Look, I don't know exactly how many have confirmed, who all have confirmed. I don't have the details. The foreign minister meeting is not for some time now. We'll let you know closer to the date as we get to that. You also asked about the 8 naval officers and that. Look, let me reiterate largely what we have been saying on this, that they attach a lot of priority to this case, I would say, and that we are following up. The visits and the communication with the families is going on quite regularly, I would say, and our mission there is, pursuing it, and all possible efforts are being made for their release and repatriation at an early date. But, as I said, family visits and access for the moment are being granted. I don't have any detailed press release, quite a detailed press release about the NSA's visit. I think it was yesterday morning we issued it. I have that actually here with me. I would also draw your attention to a very detailed fact sheet that the United States government has issued on that. One of the key elements of NSA's visit, and in fact, if I could just mention this, was that you would recall that in May 2022, Prime Minister Modi and President Biden, who were then meeting on the sidelines of the Quad Leaders Summit in Tokyo, announced what the India-US is called Initiative for Critical and Emerging Technologies. And that is, I think, is being called ICET. ICT is led by the National Security Council, Secretariat of India, and the US National Security Council under their White House. In fact, during this, quantum technology, semiconductors, space, telecom, and also defense or enabling defense co-production. We believe that through ICET is participation of multiple stakeholders, including industry, research and innovation ecosystem, to bring going. But I noticed that under the Defense Innovation and Technology Cooperation fact sheet issued by the US side, it says that the US side says that we have received indication from General Electric to jointly produce jet engines that could power jet aircraft operated and produced indigenously by India. The United States commits
to an expeditious review of this application. I don't think we should go beyond that. What has been said, that should answer your question also. पत्थर से भगवान राम की प्रतिमा बनेगी राम मंदिर में। इस घटना से आपको लगता है कि भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूती मिलेगी, खासतौर पे? Okay, Sasni. Okay, just two very quick follow-ups. Two follow-ups, okay. One on the Indus Water Treaty. The fact is that the arbitration court going ahead is an indication that the World Bank has actually not accepted India's view that there should be a graded mechanism, that it should be a step-by-step process. Have you protested in any way with what seems to be the World Bank taking Pakistan's side on the issue of which mechanism should go forward now for dispute resolution? Is this an issue between India and the World Bank? The Goda power plant in Jharkhand is very much something that is part of foreign policy. When Prime Minister Sheikh Hasina visits India, it is something that is discussed in the MEA as well as a symbol of India. Bangladesh grateful for a comment, particularly as the Bangladesh minister, according to this report, the Bangladesh minister came to India and discussed this as well. Okay, no further questions, thanks. Okay, let me end with this one. देखिए, मैं आपका जो सवाल था मंत्री जी, मुझे मालूम नहीं कैसे उत्तर देना चाहिए, क्योंकि उसमें वो हैं और रहेंगे, और इसमें सरकारों का क्या रोल है मुझे नहीं मालूम, तो इसीलिए मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा. Sailesh, Shashank, you asked about why we should take it up at all. I don't think it was taken up by our side, and तो आप देख रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जानकारी दी कि विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में करेंगे शिरकत. इसके लिए इस हफ्ते श्रीलंका दौरे पर रहेंगे विदेश राज्य मंत्री. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में मंदिरों पर हमले की विदेश मंत्रालय ने निंदा की है. भारतीयों पर हुए हमलों की भी निंदा की. इन घटनाओं की जांच और अपराधियों की धरपकड़ का भी आग्रह किया है. इस बुलेटिन में बस इतना ही. मुझे दीजिए अनुमति. नमस्कार.